Thank you, Geeta ji, and thank you, Read India, for inviting me to speak about public libraries or library, how it can play the role of a transforming agent. See, my experience of working in libraries and dealing with the people who decide about libraries and dealing with the professors of Delhi University and my own experience on the basis of all these three, I would try to say something which has not been told by the previous speakers, because I feel whatever has been covered by the eminent speakers like Mr. Bakshi, Kalpana Dasgupta madam, and Mr. Sandhu and other speakers in the inaugural session, I don't want to repeat it. I will try to speak something new and which may concern, may be related to what the Read India is doing about the public libraries. No doubt it is doing बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रीड इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ जो मैंने इनके मीटिंग्स अटेंड किए हैं पिछले 5 सालों में, वो फोर्स का लाइब्रेरी देखा मैंने, वहाँ इंटरेक्शन हुआ, इनके वर्कर के साथ इंटरेक्शन हुआ, यहाँ सेक्टर 8 में जो इनकी लाइब्रेरी है द्वारका में, उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो मैं समझता हूँ इनकी अप्रोच तो बहुत ही पॉजिटिव है। अब हम ये समझते हैं एज ए लाइब्रेरी वर्कर और एज एन ऑफिसर वाज मैनेज्ड मेनी लाइब्रेरीज दैट वी शुड नॉट बी satisfied with our work. There is always a scope for improvement in every aspect in the library management. हर जगह एक स्कोप तो हमारे लिए है उसको ठीक करने के लिए, और मैं उसी में मैं थोड़ा उसमें उसके बारे में बताऊंगा आपको। इट इज़ नॉट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड सॉर्ट ऑफ स्पीच, पर मैं कोशिश करूंगा कुछ नया बताऊं जो कि पिछले स्पीकर्स ने नहीं बताया। In the process of decision making process regarding the setting up libraries, improving the libraries, documentation of experience is very necessary. आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, रीडर्स हो, विजिटर्स हो, उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन है उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको ठीक से एक्सप्रेस करना, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं जब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पास काम करता था फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता है इट इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन। वहाँ एक रजिस्टर हुआ करता था कि जो प्रोफेसर्स या जो रिसर्च स्कॉलर्स जो किताब ढूंढ रहे हैं उनको जो नहीं मिला है किताब, वो लिखते रहते थे, और जो आंसर नहीं कर सके क्वेश्चन वो भी लिखते हैं। यू न्यू ऑल द मिनिस्ट्रीज एनुअल रिपोर्ट देयर, हमने ये किया, हमने वो किया, ऑल अबाउट अचीवमेंट, नोबडी राइट्स अबाउट देयर फेलियर्स वेयर दे हैव फेल्ड। आई थिंक दैट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी टू मेक एन इम्प्रूवमेंट। हो सकता है कि आपके यहाँ 100 लोग आए तो आपने 99 लोगों को पूरी तरह से सेटिस्फाई किया, पर जो 1-2 लोग आपके कामों से सेटिस्फाई नहीं हैं, जिसको आपने रिप्लाई नहीं कर पाए, यू शुड ट्राई टू नोट दैट। और मैं समझता हूँ कि रीड इंडिया में जो लोग हैं, जो गीता जी हैं, जो लाइब्रेरी के इनके वर्कर हैं, उनके साथ एक कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन रहे सीनियर लाइब्रेरियंस के साथ, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, ये जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को एक लाइब्रेरी वर्कर मिला था कीर्तिनगर के रेलवे स्टेशन के पास जो रहते हैं, कहते हैं बच्चे हर 2-3 महीने में एक बच्चे के ट्रेन के नीचे आ जाता है, क्योंकि स्कूल के बाद इनके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो हमने एक लाइब्रेरी खोलने का कोशिश करी है अपने लोकेलिटी के गांव के अंदर, जहां बच्चे स्कूल के बाद आ सके, आके बैठ सके, पढ़ सके या कुछ समय बिता सके। तो उन बच्चों के लिए अपने कोर्स करिकुलम की किताब छोड़ के दूसरी किताबों को एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। उससे एक डीएसपी से मेरी बात हो रही थी गाजियाबाद के, जो उन्होंने एक लाइब्रेरी खोला है, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी, उन्होंने कहा कि जब से हमने लाइब्रेरी खोला है अपने लोकेलिटी में, क्राइम रेट कम हो गया है। तो पहले बच्चे स्कूल से आते थे, इधर उधर झगड़ा, इधर इसको मार दिया, उसको मार दिया, इसके साथ झगड़ा हो गया। अब
उसमें से 4 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक बच्चा लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया, दूसरे दिन दूसरा भी जाने लगा। आफ्टर 1 महीने के बाद 2 की जगह और सब लोग वहाँ लाइब्रेरी में जाकर कुछ टाइम बिताने लगे, उससे क्राइम रेट हैज रिड्यूस्ड। सो इसका जो इफेक्ट है, सोसाइटल इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, सोशल कैपिटल, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सपोजर टू बुक्स, डिजिटल इंडिया तो हो रहा है, सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड, बट एक जो इसको हम लोग कहते हैं ब्राउजिंग एंटरटेनमेंट, हमारे दी स्कूल का प्रोफेसर भी कहते थे जब हमारे पास टाइम होता हम लाइब्रेरी में जाके बुक्स देखते रहते हैं, इसको कहते हैं ब्राउजिंग एंटरटेनमेंट। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द किड्स, द न्यूली एजुकेटेड स्कूल चिल्ड्रन। और हमें कॉन्टिन्यूसली, मैं इसको रिसर्च नहीं कहूँगा, रिसर्च तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज वे में किया जाता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, करना चाहिए कि किस ग्रुप के लोगों को, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली लाइब्रेरी कलेक्शन को डेवलप करना हम कोशिश करेंगे। और कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ बुक्स, जैसे उन्होंने बताया कच्छ से जो आए हैं, कि हम कोशिश करते हैं कि जो किताब, एक सेट किताब कहीं आया है लाइब्रेरी में, उसको बदल दिया जाए 2 महीने के बाद, नए किताबों को उसकी जगह लाया जाए। एक असम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी में, वो कह रहे थे, सेम चीज़ कहा उन्होंने जो कच्छ वाले में कहा, कि स्ट्रीट के जो बाजार लगते हैं सड़कों के दोनों तरफ, छोटे छोटे शहरों में, वहाँ किताब का एक रस्सी बांध के किताबें डिस्प्ले किया जाता है, एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। लोग कहते हैं कि वो मेरे को दिखाओ किताब, हम इसको ले जाना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से हमने एक किताबों का एक जो अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, वो हमने क्रिएट किया है। और जब आप कोई नया लाइब्रेरी सेटअप कर रहे हैं रीड इंडिया की तरफ से, आई थिंक इन एवरी स्टेज देयर इज अ स्कोप ऑफ रिसर्च, साइट सिलेक्शन, फर्नीचर, basic amenities, drinking water, clean toilets, even the setting of the furnitures. There is one lady came from Himachal Pradesh in the ICDL conference. She told us कि मैं तो अपने लाइब्रेरी का जो फर्नीचर है उसको थोड़ा सा सेटिंग बदल देती हूँ और नया पेंट करा देती हूँ। नेक्स्ट डे से मैं देखता हूँ ज़्यादा लोग आने लग गए। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रैटेजिक मूव, एंड स्ट्रैटेजिक मूव विच इज़ वेरी यूजफुल। और इस तरह के, इससे लाइब्रेरी का जो आपका यूटिलिटी बढ़ेगा। हमारे ब्यूरोक्रेसी में जहाँ मैं काम करता था मिनिस्ट्री में, एवरीबॉडी वांटेड टू आस्क मी फुटफॉल क्या है, फुटफॉल इन ए लाइब्रेरी, हाउ मेनी पर्सन्स कम टू योर लाइब्रेरी, दैट इज वन ऑफ द डिटर्मिनिंग एस्पेक्ट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइब्रेरी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, पर आई थिंक दैट इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट एस्पेक्ट। द डिटर्मिनेंट एस्पेक्ट इज, नाउ द पीपल से नॉट बाय नंबर अलोन, आप नंबर से मत देखिए, हाउ मच यू हैव एन इंसाइट टू द वर्किंग ऑफ द लाइब्रेरी। आपको इंसाइट होना चाहिए कि मेरा लाइब्रेरी कैसा काम कर रहा है, और उस इंसाइट के बेसिस पे आपका फ्यूचर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स शुड बी डिजाइन इन अ बेटर वे। और हमें लाइब्रेरी साइंस में मिस्टर गांगुली को पता है, इनको भी पता होगा, रंगश्री को, एवरीबॉडी सेज वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फाइन। विलेज में जाइए, देयर मेनी कन्याश्री, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, लड़कियों को जो मुफ्त खाना खिलाने का स्कूल में, मिड डे मील स्कीम, देयर मेनी गवर्नमेंट स्कीम जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। द पीपल से वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, but there was a very important research report in multidisciplinary journal World Development. वो कहते हैं कि we have verified in 38 middle income group and developing countries, information alone is not sufficient. How far that information is being exploited by the people to whom we have directed, that is very important. इसमें लाइब्रेरी क्या कर सकती है कि आपको तो इंफॉर्मेशन मिल गया, बट डू यू हैव द इंसेंटिव टू वर्क ऑन दिस इंफॉर्मेशन। आपको पास जो सूचना है, क्या उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं?
आपके जो लोकेलिटी कम्युनिटी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन। और अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, दिस इज कॉल्ड सेंसस टाउन्स। Whenever the census is completed after every 10 years, decennial census, इस साल तो अभी तक शुरू नहीं हुआ, 2021 में होना था, बट ड्यू टू पैंडेमिक अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। कब होगा आई डोंट नो, स्टिल पेंडिंग। उसके बाद में दे प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द टाउन्स which qualify as census towns, and in this census town there are certain basic civic amenities which are for which you have to qualify as a census town। उसमें कुछ indicators है कि 75% of the population should be in the non-agriculture sector, working in the non-agriculture sector, the population should be 1 lakh, literacy rate should be this much, and I think all the new census towns should have library facilities. If this clause is included in the government's directive and the state government or central government, whatever it is, I think then the library, public library get a boost. And I think if the Read India sends proposal for setting up libraries in the census towns, the new census towns, that will be accepted by the civic authorities and the government. This is one of my observation. See, there was a survey done by Indian Market Research Bureau when we were evaluating the National Mission on Libraries. So they give us very interesting facts. They told us the people in villages or in towns on semi-urban blocks, they are not interested to talk about library. In many cases, आप library क्यों नहीं जाते हो? Because why non-use of the library is one of the indicators in that survey. वो कहते हैं हमारे पास time नहीं है. That is not true. I think the main thing is they don't have the necessary, what we call, inclination, interest. उनके पास कोई motivation नहीं है library में क्यों जाएं. Because the library does not provide the adequate or some interesting facility or interesting material or interesting environment. कहते हैं ना ambience, जो अंग्रेजी में कहते हैं, वो वहाँ है ही नहीं तो क्यों जाएंगे लाइब्रेरी में? That's why I think I have prepared a very small report to Read India. I have told your library should be the most interesting building, the most attractive building in the entire locality. If you have resources, if you can make it a very attractive building in the entire locality, I think people will come. And they come, they will read, they will see books, they will try to see the front page of the book, the pictorial book, particularly the children. And I think that very time is short, so I will try to finish it in 2-3 minutes. And another thing I would like to say, I have seen in the reports and I have talked to some of the school librarians, the Singapore is the best example of the school education. School education का जो एक exemplary work है, that is done in Singapore. Why? Some of the teachers from Delhi were sent to Singapore. After coming back, they say the library plays a very important role there. मैं तो समझता हूँ सिंगापुर जाने की जरूरत क्या थी, यहीं जाकर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते कि कैसे किया जा सकता है. तो आई थिंक रीड इंडिया कैन सी, try to explore, try to meet the teachers who have come back from Singapore. What is special about role of library in the school education? I think that can be explored and that can be documented, and if it can be implemented in some of the libraries in India also. And skill development, I think your Read India is doing very exemplary work in the field of skill development. And the skill development report of 2018 says only 47% of those coming out of higher education institutions are employable. Others are not employable at all. The most striking example is जो अभी यूपी में 60 लाख
बच्चे अपियर हो रहे थे पुलिस के जॉब के लिए. मेनी ऑफ देम आर पोस्ट ग्रेजुएट्स. पोस्ट ग्रेजुएट कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे. मेनी ऑफ देम आर PhDs, मोस्टली फ्रॉम द जनरल स्ट्रीम, MA, MSc. बट उनके पास वो स्किल ही नहीं है जिसके लिए उनके पास जॉब होना चाहिए. देयर इज अ ह्यूज गैप. What is taught in the universities, particularly in the general stream, not in the specialized, I'm not talking about engineering or pharmacy or management, and the skills required to get an employment, maybe in the private sector or public sector, whatever it is. In that case, some strong intervention of the agency like Read India will be very useful. And given the fact that 83% of the workforce are employed in the unorganized sector in India, and many of them are employed in the service sector, for example, security guard, tourism sector, drivers, etc., with limited training facility, upgrading of school in manufacturing and the service sector is a challenge. How the Read India libraries can enhance this? This is a, I think it is not a very easy thing, but you can try, at least you can try in this aspect also. And there is active advocacy is needed to create awareness about the Apprenticeship Act 1961 and about the National Apprenticeship Promotion Scheme among different stakeholders. Apprenticeship Act को काफी importance दिया जा रहा है Government of India में. And as you know, in the Apprenticeship Act, there is a stipend given to the people who were trained, and the half of the stipend is given by the government and half the organization. How this can be promoted, even with the Read India enterprises, because any organization who employs 3 or 4 or 5% is taken under the enterprise survey of the Government of India, and they can apply for the recruitment under Apprenticeship Act. That is what I understand. I don't know whether it has changed or not. So these are some of the issues I wanted to raise, and I think I have raised certain relevant issues. And lastly, I would again thank Geetaji and the Read India authorities to give me this opportunity to express my views. And I have written many things in my report, and I do not know whether this can be, how many of them can be implemented. But if you have resources, that is the first assumption I made while writing the report. If you have good resources, you can try on these fronts. This is very important. Thank you very much.